हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 11 अक्टूबर 2022, दिन है ट्यूसडे और आज हम करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। रसिया लॉन्च फ्रेश अटैक इन मिसाइल रेड। द स्ट्राइक व्हिच कम a day after the key breach to Crimea was damaged so 75 missile creating the adhoc at several cities across the Ukraine including Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Lviv। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। रशियन फोर्स लॉन्च टू बार रेंजल a fatal bomber across the Ukraine early on Monday in a apparent retaliation for the explosion of damaged key bridge to Moscow annexed Crimea। उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया इंडिया डीपली कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग वायलेंस। द इंडिया ऑन मंडे एक्सप्रेस द डीपली कंसर्न ओवर द escalating violence in Ukraine as a call for the immediate return to path of diplomacy and dialogue। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिसोल्व किया कि नॉट टू डेलिब्रेट ऑन अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिसोल्व नॉट टू अंडरटेक एनी फर्दर डेलिब्रेशन ऑन द 10 names identified for the consideration of the top court judges। Law Ministry has already sent to request Chief Justice of India U. Lalit to nominate his successor, Justice D.Y. Chandrachud, as Abdul Nazir objected on the CJI proposal to recommend name of appointment as the Supreme Court judge through the circulation. Justice Sanjay Kishan Kaul and M.K.M. Joseph was accord with the Chief Justice proposal. The Collegium resolved said that it will see why the Collegium is leaving unfinished work of the recommendation new judge। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए। समाजवादी पार्टी फाउंडर 3 times यूपी सीएम मुलायम सिंह passes away। समाजवादी पार्टी Chichia, 3 times Uttar Pradesh Chief Minister Mulayam Singh passed away on Monday, Gurugram Hospital after a long spell of the illness. He was 82. The President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Congress President Sonia Gandhi, top leaders have expressed his grief, saying that his death will be a huge void. The mark of respect to Uttar Pradesh Chief Minister Adityanath announcement 3 days state mourning and said that Mr. Singh's last rite will be conducted with full state honor the Tuesday at the Safari Village। उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया गया, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो एडिटोरियल की है, बैटल फॉर सेना। द बो एंड एरो इज मोर देन द सिंबॉलिक वैल्यू फॉर द टू फैक्शन। इन इंटरिम ऑर्डर ऑन मंडे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉटेड द बाल साहेब बंची शिवसेना as the party name for Eknath Shinde fiction for the Shiv Sena, also asking to furnish the fresh list of 3 symbols by the Tuesday. The name bow and arrow symbol is also the claim by the Shinde and the Maharashtra Chief Minister. Election Commission preceding decision to freezing the name and symbol for Shiv Sena, which followed the president, is the earlier case of split in the All India Anand Dravid Mannetra Kajangwa and Lok Janata Party Janshakti Party. The commission had kept symbol suspended until the final decision, considering the claim of revival function to taken. Symbol are more than the symbolize the political party after the year of the mutual association. In some cases, symbol may be carry on the political meaning in the case of Rashtriya Janata Dal 19, Samajwadi Party cycle, bicycle, Shiv Sena may have the field bow or arrow went well the consistent effort to embellish strength inherent in now the central dispute between the two factions through the election commission fortune. It's a legal battle for the symbolic and name that will be continue both and function in support of the other claim. Election commission thought task to the determining the side could get on the Sena bed. Mr. Sindh is allied to Bharatiya Janata Party. He is the power in center who get the inherit the legacy. Bal Thackeray has huge bearing the political fortune of both। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया। रशिया continued defense in international law. The widespread global condemnation, including the resolution in the March 2022 adopted 141 countries in United Nations General Assembly, demanding Russia immediately and unconditionally withdraw from the Ukraine. Moscow barely continues with illegal military offensive against Kyiv. The resolution by the UNGA are not binding, but the decision of international justice of Court of Justice or Ukraine application of ICJ is the provisional measure ruling the march against the march and orders Russia to immediately suspend the military operation in Ukraine. Russia has not complied with the decision, and meanwhile the Russian troops in Ukraine have been accused, including in war crime, international humanitarian law,
Ukraine is not only the fighting the brave military battle to defend the sovereignty, but it also using the possible lever under the international law against the Russia. It moved to the international court such as ICG, International Criminal Court, European Court of Human Rights, and put Russia in the dock. And but the nothing seemed to be discussed. Russian President Vladimir Putin is released an imperial design, but Mr. Putin will be willing to go great leader, but the current Russian Empire to attain the mythical civilization greatest, even if it means restricting at the every foundation of the post-war international legal order absolutely built on the core values of the sovereignty and non-intervention. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देखिए आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं. Kicking around the ISL, the crucial for Indian football, but has failed to live up the promise. With the ninth session of Indian Super League, the commencing in the Kochi and Bell set to roll out the FIFA Under 17 Women World Cup, the bombnester from the Tuesday football in India can be finally put to behind the chaotic and unpleasing period that is the littered was the boardroom battles and litigation in the national highest court. तो उसके ऊपर आर्टिकल दे गया. अब चलते हैं नेक्स्ट. अक्टूबर सरप्राइज एंड नवंबर इलेक्शन. Within the barely week to go for the November shutdown, the Republican and Democrats pressing for the event to on the only serve the political landscape in the United States for the next 2 years, but also the general framework and slowdown in the 2024. Without Donald Trump, Democrats are especially concerned he should be more than the one region holding their own rank is a major task, and breathing back to the president down to the rhetoric of the many of the grand old parties. GOP fraudulent US president election in 2020 seem to bigger challenges. तो उसके ऊपर आर्टिकल देगी कि नवंबर में जो मिड टर्म की इलेक्शन होने वाली यूएसए में, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. बिल्डिंग रेजिलियंस मिनरल सप्लाई चेन. In his independent address, Narendra Modi exhorted the country pressure the Atmanirbhar energy focus of the clean energy technology concern over the fragile availability of oil gas in the wake of Ukraine crisis continue to fuel global policy debate on regional security. However, the fragility of clean energy supply chain to offset the pathway the country should reduce the dependence on the fossil fuel. The imported inflationary pressure through the exposure of the violated oil and the gas market also the pros to reach to the macroeconomic growth and stability, particularly in India. Import dependent on around 85% of its oil and half of the gas need to therefore the secure the access to key minerals such as lithium, cobalt, nickel, rare earth mineral, critically building resilience and indigenous supply chain for the clean energy technology. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया building resilient mineral supply chain. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पर जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट किए. हाउ सिंग जिनपिंग रिमेड द चाइनीज पार्टी स्टेट. Will Xi Jinping rapid accumulation of power through the various policies such as a strict anti-corruption campaign and remarks to party state system may be brought him to the challenge control. It has removed all the shape of the dissent. At the time of Xi Jinping accession of the 2012, the Communist Party of China 18th Congress and vigorous debate are playing out in the pages of Communist Party newspaper between the party's left and right fiction, each arguing the different direction in the country policy. तो उसके ऊपर आर्टिकल ये न्यू एरा जो सिंह जिनपिंग के आने की वजह से क्यों न्यू एरा आया, पॉलिसी ऑफ द सिंह जिनपिंग क्या थी और पार्टी सैम टू एक्सेशन क्राइसिस और 2010 ट्रांजिशन प्लेड मिस्टर सिंह एडवांटेज हु वाज गिवन टू मैंडेट बाय द पार्टी कीप टू शिप फॉलोड क्लीन of the army. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में. थ्रोटल एट द grassroots how the strengthen the decentralized governance, local government remaining the hamstrung and ineffective. The mere agent are to be bidding higher level of government. This crop the intendency gram sabha and toward the communities in urban area have to be revitalized. It has been 30 years since the 73 amendment which invited the three-tier Panchayat Raj system at the village interim district level and tabled in parliament. The article that T.R. Raghunam on September 9, 2019 talks about the filing the decentralizing what must be the reveal the ग्राम सभा एंड लोकल गवर्नमेंट. तो उसके ऊपर आर्टिकल देंगे. आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ने की कोशिश करें. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. पाकिस्तान टू टेक पार्ट इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ SCO anti-terror exercise hosted by the India. Official source come from the country. Delegation have been invited to exercise aimed to the building synergy between the counter-terrorism force and SCO rat
मेंबर्स कंट्रीज इंडिया पार्टिसिपेंट जेटी 2021 होस्ट बाय द पाकिस्तान। तो उसके ऊपर आर्टिकल है पाकिस्तान हैज बीन इनवाइटेड टू क्लोजिंग सेरेमनी October 13 ongoing joint anti-terror exercise jet within the midst of Shanghai Cooperation Organization hosted by India. Officially and diplomatic sources confirmed the Pakistan delegation have been extended to invitation closing the ceremony on the last date of jetty and Master Anti-Terror 2022. Diplomatic source said was the confirm on official source. National Security Guard is hosting the multinational jetty Menser Anti-Terror 2022 under the framework of the Shanghai Regional Anti-Terrorist Structure at the NCG Manser Garrison। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। आर्मी डॉग यूज्ड इन द कश्मीर इनकाउंटर द इंजरिंग इन द फ्रीइंग चिल्ड्रन और नॉट टू बी पार्ट ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस टू इलेक्शन कमीशन। तो उसके ऊपर छोटा छोटा आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से टर्न होंगे। नेक्स्ट पेज जो वर्ल्ड की है, नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली टेस्ट किया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल ओवरसीन बाय द किम। और मेक्सिको की ट्रॉपिकल स्टॉर्म जूलिया इमर्ज ओवर द पैसिफिक आफ्टर द क्लोजिंग नागरगुआ। और कोलालमपुर की न्यूज है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व किया है पार्लियामेंट को अलाउंस टू स्नैप पोल। और लंदन की जुबिलियन एक्सचेंज टू टेस्टेड पॉजिटिव और कोविड-19 इन प्रिजन से वाइफ। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। पुतिन भो टू सर्व अटैक आफ्टर द रशियन मिसाइल हिट यूक्रेन एट लीस्ट 11 killed in the strike at that was the apparent the retaliation for the explosion at the Crimea bridge and keep call for the response to the imbalance the lesson। उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मोल्दोवा से द मिसाइल क्रॉस इट इज एयरपेस। मोल्दोवा जो यूक्रेन के साइड में एक कंट्री है, उसने कहा है कि उसकी मिसाइल रशिया की मिसाइल ने क्रॉस किया उसके एयरफोर्स को। और फीड एक्स चेयरमैन बैंक बेर्निस शेयर द नोबेल विद टू अदर यूएस इकोनॉमिस्ट। इस साल के जो नोबेल पुरस्कार है इकोनॉमिक्स के लिए, वो 3 लोगों को अमेरिका के बैंकर को दिया गया है। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। प्रोटेस्ट इन ईरान ओवर द वुमेन डेट रिच की ऑयल इंडस्ट्री। तो उसके ऊपर ये छोटा सा आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं बिजनेस में। टीसीएस के सेकेंड क्वार्टर के नेट क्लाइम किया गया है 8.4% टू 10,431 crore ऑन द स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो उसके ऊपर आर्टिकल। एम्प्लॉय अट्रैक्शन से हाई एट द 21.5 MD environmental challenging but the flag inflation cost optimization as client deal with the volatility। रुपीस में हिट 84-85 पर डॉलर मार्च ऑन द ट्रेड डेफिसिट ऑयल। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने वो किया है इन्वेस्टर टू ऑन द यूएसए विजिट दिस वीक। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया है। और एनएमडीसी कीप आयरन और प्राइस कांस्टेंट इन फॉर द थर्ड मंथ। तो उसके ऊपर छोटा सा आर्टिकल है। आईओबी रिजर्व द इंटरेस्ट रेट ऑन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म डिपॉजिट एंड दैट इज सेट टू आई जेस्पकर सीमेंट यूनिट फॉर द 5,000 crore। म्यूचुअल फंड एसेट क्लाइम टू हायर देन द एसपी इन्फ्लेशन आईएमएफआई। जो डिफाइंड इनफ्लो सिस्टम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है प्लान टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट रोज टू 39.88 lakh crore in September from the 36.73 lakh to crore in the earlier। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। रिकॉर्ड 5.5 lakh व्हीकल सोल्ड ड्यूरिंग द नवरात्रि एफडीए। उसके ऊपर छोटा सा आर्टिकल दिया गया। एलआईसी एमएफ राइज टू द इक्विटी स्कीम शेयर टू द 45%। स्पेस इकोनॉमी में भी टच टू 13 billion बाय द 2025। तो उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया। इंडियन स्पेस इकोनॉमी सेट टू द रीच 13 billion बाय द 2025 अकॉर्डिंग टू जॉइंट रिपोर्ट बाय द प्रिपेयर्ड बाय द ईवाई एंड स्पेस इंडियन स्पेस एसोसिएशन एपेक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ द स्पेस एंड सैटेलाइट फिल्म इन द कंट्री। तो उसने ये कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो स्पोर्ट किए। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के डिस्कशन के लिए इतनी। थैंक यू। जय हिंद।